Hello everyone. Today we are going to study an important topic of engineering hydrology, that is estimation of missing rainfall data. Now when so many rain gauges are working at different locations in a catchment, it is definitely common that some or the other rain gauge stops working or becomes inoperative in due course of time. That doesn't mean that we'll stop any kind of analysis on such sites. Through certain statistical analysis and mathematical techniques, there are certain methods evolved to determine missing rainfall data. यानी कि अगर किसी एक जगह पर या किसी एक कैचमेंट पर 4-5 रेन गेजेस लगे हुए हैं, सपोज इस प्रकार से रेन गेज लगे हुए हैं, अब ये वाला रेन गेज काम नहीं कर रहा है, बाकी सारे रेन गेज काम कर रहे हैं, तो हम कुछ तरीके अब पढ़ेंगे जिससे कि ये मिसिंग रेन गेज का डेटा हम अप्रोक्सीमेटली प्रेडिक्ट कर सके, ताकि हमारा आगे का एनालिसिस हो सके, हमारा काम हैम्पर ना हो. तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन method is to determine through arithmetic mean. Okay, so here Px is the missing rainfall of station X. So commonly X, जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, अननोन होता है हमेशा. सो यहाँ पर भी X वो स्टेशन है जिसका डेटा मिसिंग है, रेनफॉल डेटा मिसिंग है. तो Px, that is the missing rainfall, is equal to summation of precipitation of all other rainfalls recorded by all other stations upon total number of rain. This is the most common method. इसको थोड़ा सा अगर हम और मैथमेटिकली श्रिंक करके लिखे तो I को 1 से n तक चला देंगे, Pi upon n. This is how we calculate missing rainfall of station X, where X is the total number of index stations. यानी कि कितने रेनफॉल स्टेशंस टोटल में उस जगह पर है. ओके, सो दिस इज हाउ, ये बहुत ही सिंपल तरीका है एंड इसमें थोड़े से लिमिटेशंस भी है, ये हर जगह यूजफुल नहीं होता है. सबसे पहली बात तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. अगर मेरा कैचमेंट इस तरह से है कि इतने पार्ट में बहुत तेज बारिश होती है और इतने पार्ट में बिल्कुल कम बारिश होती है, उस केस में अगर मेरे पास अनइवन रेनफॉल है कैचमेंट में, तो ये मेथड बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है इफ इन केस ऑफ अनइवन रेनफॉल. और एटलीस्ट 3 रेन गेज स्टेशन का डेटा इसमें होना ही होना चाहिए. कम से कम 3 रेन गेज स्टेशन होने चाहिए. साथ ही साथ the rainfall value of the missing rain gauge station should be within 10% of the normal rainfall value of all other index stations. And preferably this method works well when rain gauges are evenly distributed throughout the area and are spaced closely. Okay, आसपास में लगे हों तो ये मेथड ज्यादा अच्छे से काम करती है. These are all the things that you need to take care of. This method is known for its simplicity. Okay, it is very simple to use. That is why this method is known for its simplicity, especially when rapid results are needed. Now let us try to understand this through a numerical. Okay, this numerical says that a watershed has 4 rain gauge stations, A, B, C, and D. Okay, sorry, A is missing here. During a storm, A was inoperative while B, C, and D recorded rainfall values of 48, 51, and 45 mm. You have to estimate the missing precipitation at station A using arithmetic mean method. Okay, so we have just seen the formula. Precipitation of missing station will be equal to sum of precipitation of all other stations. So station B ka precipitation is 48 mm, for C it is 51, and for D it is 45. So I'll just add them up and I'll divide this by total number of index stations. That is, I'm basically taking only the mean or average of all these values. So here it comes out to be 48 mm. So the missing precipitation at station A is 48 mm. This is how simple
this method is. Next class, we'll see the other two methods, that is the normal ratio method, and subsequent to that, we'll see the inverse distance method to determine missing rainfall. Thank you very much.